Om Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone world over, all our brothers and sisters across the globe, those are joining us today on 22nd of March 2023, Wednesday. We are joining you at 6 minutes past 8 p.m. My sincere apologies because our team leader today is not well and she was to undergo some medical treatment. Because of that, things got little, you know, haywire, and that's why we had to pack everything in a systematic way. And that's what, basically, when you deal with the tourism, you've got to accommodate every customer, every tourist, every person, whosoever is visiting you. So, similar way, ladies and gentlemen, we have packed everything, something very systematic for you, interesting for you. We'll go that way. And today is the next part of our Vision India Tourism 2047. And at the end of the program, we will give you two recommendations from our side. What exactly our chamber feels when we have spent considerable, almost 4 decades with travel and tourism industry. So we will talk about that in a little while. So hearty welcome to our series and our regular program, which comes 8 o'clock every day. So hearty welcome. And it's a green morning, it's a green afternoon, it's a green evening. Wherever our friends are world over, we extend a very hearty welcome to all of them. Mr. Mohit Chaudhary from Pathankot is the first person today and is the winner of 1,000 rupees, being the first on the YouTube channel to join this morning, this afternoon, this evening, because we all are in different time zones in the different part of the world. So somewhere it's morning, somewhere it's afternoon, somewhere it's evening. पूरा प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. We will talk about something wonderful, amazing what India offers to every tourist whosoever visits India. तो आइए चलते हैं इकट्ठे. International Chamber for Service Industry extends a very warm welcome to all of you, ladies and gentlemen. Our chamber focuses on non-resident Indians, Indian diaspora, wherever they are. And we believe Vasudhaiva Kutumbakam because G20 is also talking about same thing. There's one world, there's one civilization, and we all are together in this particular journey. So let's move together. We extend a hearty welcome to Julie Subba ma'am, also from Northeast. Student Queries Group also, those are joining us. Hearty welcome and a pleasure to have. Today's United Nations Water Day, 22nd of March. And happy World Water Day 2023. Accelerating change. Our president, who is a waterman from Singapore, a wonderful person, always thinks about what could be done. And I have learned something very interesting during the pandemic from him. He told, there is no shortage of water. It's basically what we require is management of water. So once we manage the water properly, there'll be no shortage world over. Almighty, the God has given us enough water to survive on this planet called Earth. Now, World Water Day 2023, accelerating the change to solve the water and sanitation crisis. That's what we have to talk about. चलिए सफर में आगे चलते हैं. Yesterday, if you recall, we discussed with you the policy framework as far as the new proposed policy, which has to be unveiled and which has to be made public, but a lot of deliberations are going on that. But we are pretty sure that soon it would come. Then we had discussed yesterday previous policies as well, where we gave you the insight how the policies basically were made for tourism and how right from the 1947 onward, how the country moved on, when exactly the tourism got identity in the economy, and what role tourism can play if the policies which are made, they are implemented in totality. We also extend a very hearty welcome to Vidhi Jaiswal ma'am. She has also joined us. Deepa Hazarika, hearty welcome. And all other dignitaries, those are joining us over here. We extend you a very warm welcome. Today is a very important topic, very important subject. All of us, let's focus onto it and take the vision of India, how the tourism would be in the Amrit Kal and when India would be celebrating its 100 years in 2047.
7th, 8th, and 9th of last month, if you recall, in Run of the Kutch, there was the first meeting of the working group for the tourism under G20. From world over, the people had come. Run of Kutch is in Gujarat, beautiful place on the western part of country. People had gone over there, and the Honorable Union Tourism, Culture, and the Northeast Minister, he basically focused on rural tourism. And he told how rural tourism, because India is rural, when you talk about green tourism, farm tourism, agri-tourism, rural tourism, nature tourism, flora and fauna tourism, I don't need any script because it's coming right from within. I spend a considerable time with this industry and I'm very passionate about it. Now, the first Global Tourism Investor Summit is going to take place 17th, 18th, and 19th of May 2023. I also must share with the universe कि हमारे भारतीय कैलेंडर के हिसाब से हमारा जो अपना भारतीय परंपरा और संस्कृत है और संस्कृति है उसके हिसाब से आज पहला दिन है नव वर्ष का और आज नवरात्रि का भी पहला दिन है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक नई यात्रा पर हम सब लोग इकट्ठे निकलते हैं और चलते हैं टूरिज्म पर्यटन के साथ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली सभी टूरिज्म मिनिस्टर के साथ एक इंटरेक्शन किया था, अपना विजन शेयर किया था और बताया था कि हाउ टूरिज्म बेसिकली कैन चेंज द प्रोफाइल ऑफ द होल कंट्री and how it can be economic multiplier as far as the India becoming 5 trillion economy is concerned. We also extend a hearty welcome to Prachi Kalita, Anand Mukherjee, Nancy Sangma, Laishram Damini, and all other dignitaries. Those are joining us over here. It's indeed a great pleasure to have all of you. So, as a part of the G20, first Global Tourism Investor Summit will be taking place at Pragati Maidan from 17th to 19th of May. You can mark your calendar. You can see it over there. That would be wonderful. You must go through and you will be able to participate, enjoy, because this will be a unique event, something remarkable. Now, Ministry of Tourism, Government of India recently participated in ITB Berlin also. We got lots of awards, rewards also. Here is the Secretary Tourism, Government of India. India is also celebrating Visit India year 2023. And at Berlin, it was a wonderful show. The entire travel trade was together and hotel industry had also gone, tour operator, travel agents, corporate world, and the governments from the state governments and the Ministry of Tourism together, all of them, they participated. Now, there is a scheme of Swadesh Darshan. Swadesh means your own country. Honorable Prime Minister, during the pandemic, thick of the pandemic, he talked about domestic tourism. We'll talk that in a little while. But if you recall, yesterday we have discussed with you the Swadesh Darshan scheme, which is a central government scheme, and that was launched in 2014 and 15 under the Ministry of Tourism and Culture, Government of India. It is for basically integrating the entire cultural heritage of India, our spiritual journey, our pilgrimage, and what all India offers. Now, this scheme basically aims to promote, develop, and harness the potential of tourism which we have got in our country. And Government of India is giving lots of financial assistance to state governments, union territories, and everybody to develop their infrastructure with regard to this. Then there is a Prasad scheme also, if you know, that is pilgrimage, rejuvenation, and spiritual augmentation drive. Yesterday we have discussed in detail. It's basically the spiritual and the pilgrimage journey. There is also a scheme, CBSP. Now, this is something very important. It's basically capacity building of restaurants and hotel officials, the people, those are working over there, those are in travel trade, because the tourists, those are coming from different countries. If we want repeat tourism, if we want high spending, tourists coming to India, if we want that they should carry good experience from India, then we got to work on, because the tourists, those are coming in India, when they come in contact with the various service providers,
If those service providers are not professional, their etiquettes, their manners, their gesture, their body language, their personality, their articulation, their communication, their hygiene, their cleanliness, and their services, the techniques, all that we have to take into consideration. If we leave a good imprint on those tourists, those are visiting us, we are certainly going to have repeat tourism in our country. That means we got to spend less money on marketing, and there'll be automatic tourist traffic coming to our country, which is very important. There are various other schemes also. If you go through the Ministry of Tourism, Government of India website, now let's take an example. When India participates in World Travel Mart or ITB Berlin or PATA or ASTA, there's so many conferences and events and trade fairs which are taking place outside, where the state governments also participate, private sector also participate, the trade also goes. So the Government of India, Ministry of Tourism, they approved the revised the guidelines for marketing development assistance, that is projecting India as a one identity, as a package abroad, so that we can market ourselves aggressively in a proper way, and people visit India, people travel to India, people come to India. All that is to be done, and that is under the marketing development assistant. Then there is another one. If you recall, we had discussed with you earlier in another webinars that in February 2018, under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, 12 champion sectors were identified by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and that was approved by Niti Aayog and finally approved by Honorable Prime Minister, and 5,000 crore was allocated for that. So, approved revised guidelines for the champion services sector, where travel and tourism, hospitality, aviation, it's called CSSS scheme. And that is basically to give incentive to the tour operators so that they can enhance more tourist inbound tourism coming to India, something very important. Project the guidelines to adopt a heritage. Apni dharovar, apni pehchan. This is another scheme of the government. And then the capacity building of service providers. We have already discussed for the hotel industry, for the travel trade, for the tour operator, for the tourist guides, everybody. And then there is a market research professional services scheme also available. Assistance to these central agencies, for tourism infrastructure development. We need proper tourism infrastructure. When tourists go to different places, they should travel hassle-free. They should get the food of their choice. They should have, God forbid somebody falls sick, there should be proper medical assistance. Then the wayside amenities which has to be created across, because the roads are beautiful now. Now, this is also another revolution because India is going total digital. If you want to become a tour operator, tourist transporter, travel agent, or green shoot or a startup for the tourism, then there is a scheme available that is eTravelTradeApproval.nic.in. This is the portal. I repeat it for you. eTravelTradeApproval. एक ही शब्द है. .nic.in. If you go over here, online, there are 3 steps. Number 1, get yourself registered. Number 2, fill the application, and thereafter upload and scan the documents. And thereafter, ladies and gentlemen, you can have an automatic e-travel trade recognition for yourself, whatever you look forward to. So we thought we should facilitate and we should give you the idea what exactly has been done so far in this e-part. Now, let's come on to it. During the pandemic, 25 March 2020 को पूरा complete lockdown हुआ. Imagine the vision of the Honorable Prime Minister, his far-sightedness. He thinks far ahead. And, जो भी चीज को plan करते हैं, he always thinks how it is to be done. And that time he told, देखो अपना देश, Ministry of Tourism, Government of India, आपकी यात्रा के लिए, आपकी ट्रैवल के लिए, आपके टूर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे द मनी. आप अपने बिल सबमिट कीजिए, एविडेंस दीजिए, फोटोग्राफ्स दीजिए. एंड कैन यू इमेजिन मोर देन 2 lakh people have availed this particular facility. I spoke to a couple of people in the Ministry of Tourism and I learned, and it was a pleasure. And I asked them,
What exactly is going on now at present? So I'll share that with you in a little while. But imagine the vision कि पूरा खर्चा सरकार देगी. That is the vision of the Honorable Prime Minister. आपके घूमने का पूरा खर्चा. देखो अपना देश. Travel to 15 locations across India, and that started way back in 2020, and it is remarkable. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी मनाया गया, वो भी उसी का पार्ट रहा. भारत सरकार की पहल. देखो अपना देश, एक लोगो कंटेस्ट हुआ, मुफ्त में भारत घूमने का मौका पाओ. फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आजादी का बीड़ा उठाया था 1947 से पहले का, देखो अपना देश में वेबिनार क्विज प्रोग्राम हुए. रेलेवेंस ऑफ दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 21st सेंचुरी में उनकी क्या रेलेवेंस, बच्चों को पता ही नहीं है. क्योंकि किताबों में जब तक इसका चैप्टर नहीं होगा, आजाद हिंद फौज के बारे में किसको पता लगेगा. कौन जानेगा कि मोरान एक जगह है और वो मणिपुर के अंदर है, और आप जब इम्फॉल में लैंड करते हैं तो वहां से बाय रोड जाकर इस जगह को विजिट करके वो देख सकते हैं कि जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने झंडा लहराया था, वहां पर एक लाइब्रेरी भी है, छोटा सा म्यूजियम भी है. When I had gone over there, I realized what exactly this man had the vision. उसके बाद आप आईआरसीटीसी का देख लीजिए. रेलवे इज डूइंग वंडरफुल. भारत आई से वंदे भारत ट्रेन तो आ ही रही हैं. उसके अलावा स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चल रही है, रामायण सर्किट की है, और उसी के साथ साथ आप ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल ट्रेन है. समथिंग वंडरफुल विच इज टेकिंग यू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ये भारत गौरव की एक रेल, ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं. और चार धाम यात्रा का टूर पैकेज वो भी आईआरसीटीसी दे रहा है. देखो अपना देश में बुद्धिस्ट के लिए बुद्धिज्म बेस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑन बुद्धिस्ट ट्रेन एंड स्पेशल कोचेस एंड ऑल दैट, आईआरसीटीसी अंडर दैट. और अब देखिए, देखो अपना देश में कितने सारे लोग बाइसिकल टूर पे. yesterday when I was talking to Pathankot में with Mr. Balkrishan ji, one of his nephew, he has taken a bicycle tour and he is going on the electric bike, and that is energy saving. He's traveling from all the way from Kashmir to Kanyakumari. It was a treat to my ears when I heard from them. So just imagine, lot of webinars have been conducted by the Ministry of Tourism, Government of India, and hats off to that time the DG Tourism, Government of India, Mr. Rao, and Mrs. Barar. She took lots of efforts and she put in so much. Dekho Apna Desh and the entire travel trade. ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का scenic train journey, traveling and taking the people. Prema Khandu ji, the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, he flagged off the ceremony. Dekho Apna Desh. Can you imagine the Northeast? And yesterday I was watching one program of the Honorable Prime Minister of India. आप लोग भी जरूर देखिएगा YouTube के ऊपर, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का, जिसमें अरुण पुरी जी ने कुछ बताया, बोले, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बोले. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आधी शतक, कि 50 बार तो मैं भी नॉर्थ ईस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जा चुका हूं. इमेजिन, ही ब्रॉट एंटायर नॉर्थ ईस्ट कि दिल्ली से दूर नहीं होना चाहिए, दिल से दूर नहीं होना चाहिए, and he brought the entire thing. It's a worth watching. Do watch that video on the YouTube. You'll enjoy so much. Honorable Prime Minister has conveyed what exactly is his vision. पेमा खांडू जी का ये देखिए तवांग का फेस्टिवल. देखो अपना देश में, when you go and when you travel to 8 beautiful states of Northeast, there's so much you can enjoy. और उसी तरीके से अलग अलग थीम को लेकर कल्चर पर, आर्ट पर, कुजीन पर, डांसेस पर, म्यूजिक पर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर. और ये अपना जो एक देखो अपना देश की जो वेबिनार सीरीज चली, इसमें बहुत सारे वेबिनार इतने इंटरेस्टिंग. और अब हम जब G20 सेलिब्रेट कर रहे हैं, द प्रेसिडेंसी हैज कम टू इंडिया, और रन ऑफ कच्छ के अंदर 7th, 8th, 9th February, which I shared with you, there was a wonderful deliberations for 3 days, एंड पूरा ग्रुप मिला टूरिज्म का, डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए. रन ऑफ कच्छ को महसूस कीजिए, आप देखिए कि हाउ मच हैज हैपेंड ओवर देयर. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट देखो अपना देश, so ministry, some of the people, they informed me that there's a photo shoot contest still going on. People those are interested, and those click their camera very often at different places. देखो अपना देश में
पार्टिसिपेट कीजिए और ये कैंपेन ऑन रहनी चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक टूरिज्म इज द बेस एंड द फाउंडेशन ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट। टेक द प्लेज। इसके अंदर प्लेज भी लोगों ने ली थी कि मैं भारत में 15 जगह जाऊंगा। ये देखिए हमारी म्यूजिक, हमारा आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, और इस तरीके का एक प्रमाण पत्र भी था। मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मैं भारत की अद्भुत जो हमारी विविधता है उसको देखने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन को साकार करने के लिए खुद को समर्पित करते हुए 2022 तक देश में कम से कम 15 पर्यटन स्थलों पर जाकर अपने अतुल्य भारत को देखूंगा या देखूंगी, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी। And this kind of a certificate was also given, and government paid the money also for this particular travel. Incredible India. Now the second part of the same thing is going on. Our deepest and heartiest congratulations and thanks to Amitabh Kanji also, the brain behind, who initially brought that God's own country, and thereafter he dedicated. He's so passionate about the shape of the G20 towards tourism, and now very special focus is being given on tourism. And ladies and gentlemen, if we focus on tourism very well, there's no question that India doesn't become soon the 5 trillion economy, the vision of the Honorable Prime Minister. Right from the Red Fort, Prime Minister Saab ne kaha, to some, the target of nearly doubling the size of the Indian economy to 5 trillion in 5 years may seem difficult, but when we have in 5 years added 1 trillion as compared to 2 trillion size achieved in 70 years of independence, then this target is very much achievable. So with the conviction and the vision and commitment of the Honorable Prime Minister, because he is very keen that the tourism should get promoted. आप सब खुद महसूस कीजिए, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जिस जगह से आप आते हैं, जिस जगह आप ट्रैवल करते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो सो मोदेनॉमिक्स की मैं बातचीत करें तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट्स वेरी मच पॉसिबल. The only thing is we got to focus on Indian tourism industry to boost economy. जितने भी लोग टूरिज्म में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्किल्स को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने टैलेंट को, अपने पैशन को पॉलिश करें, उसको बूस्ट करें. और वो सारी चीज को अगर हम सब लोग इकट्ठे मिलके, जितने भी ट्रैवल ट्रेड के लोग हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनबाउंड टूरिज्म में डील कर रहे हैं, एक्सकर्शन टूरिज्म में डील कर रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म में डील कर रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म में डील कर रहे हैं, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, या होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, HAI, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जितने भी, टाफी है, ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसी तरीके से जितनी भी एसोसिएशंस हैं, ये सब इकट्ठे अगर मिलकर एक बार प्रयास करें और हम अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर भी लेके आ सकते हैं. रीजनल इम्बैलेंसेस को CK प्रहलाद जी को पढ़िएगा, जब उन्होंने कहा था कि हाउ द बेस ऑफ द पिरामिड इज टू बी गिवन द बूस्ट एंड हाउ वी कैन डू इट. CK प्रहलाद जी के भी वेबिनार्स बहुत अच्छे हैं. Whenever you get time, you must watch, you must go through, you will get lots of knowledge, Professor CK Prahlad. And if we focus on Indian tourism, domestic tourism, and at the same time inbound tourism, and give them seamless services, ladies and gentlemen, the boost we can boost. और दूसरा, डोमेस्टिक टूरिज्म टू बी द इंटीग्रल पार्ट. ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है हमारे चेंबर की तरफ से. NCERT को, स्कूल एजुकेशन को, CBSE को, नवोदय विद्यालय को, केंद्रीय विद्यालय को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, हर एक को हम एक ही बात कहना चाहेंगे, ये जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, ये अलग से एक वोकेशनल सब्जेक्ट क्यों हो? Why not it should be integral part. जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो भी टूरिज्म से जुड़ी है. आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो भी टूरिज्म से जुड़ी है. आप आर्ट पढ़ाते हैं, वो भी टूरिज्म से जुड़ी है. आप डांसेस, म्यूजिक, कल्चर, कुजीन, हेरिटेज पढ़ाते हैं, वो भी टूरिज्म से जुड़ी है. तो why are we having डोमेस्टिक टूरिज्म एज ए वोकेशनल सेपरेट क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर हमको हायर एजुकेशन में जाना है, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, PhD में,
टूरिज्म को अलग से रखिए, because that is at the different level. But as far as school education is concerned, we strongly recommend from our chamber, vocational की बजाय tourism should be integral part of our textbooks. और डोमेस्टिक टूरिज्म जब आप पढ़ाएंगे, लोग ये कहेंगे, ओ माय गॉड, इंडिया इतना खूबसूरत है, यहाँ पर सारे सीजन है, 365 डेज, यहाँ पर तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, डांसेस हैं, म्यूजिक है, कॉस्ट्यूम्स है, कल्चर है, प्लांटेशन है, अरे क्या नहीं है यहाँ पर, सब कुछ है भारत में, सब कुछ है। आप एक बार, मैंने ऑल इंडिया टूरिज्म क्विज कॉन्टेस्ट के लिए मैं ट्रैवल किया था लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, मैं पूरा भारत नहीं देख पाया, आर्मी की यूनिफॉर्म में पूरा भारत नहीं देख पाया। बहुत विशाल देश है, बहुत महान देश है, बहुत खूबसूरत देश है। इट हैज गॉट लॉट टू ऑफर, सो वी स्ट्रांगली रिकमेंड डॉक्टर सकलानी जी, द ऑनरेबल डायरेक्टर एनसीईआरटी, इसके बारे में विचार कीजिए। जो स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी नए आए हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, आपसे भी हम अनुरोध करेंगे, त्रिपाठी जी जो सेक्रेटरी सीबीएसई हैं, उसी तरीके से गर्ग साहब जो नवोदय में हैं, और मैडम पांडे जो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में हैं चेयरपर्सन, इन सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार सब इकट्ठे सोचिए। अगर प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये देख रहे हैं, उन्हें सामने नजर आ रहा है, और उन्होंने सारी स्टेट के टूरिज्म मिनिस्टर्स को इकट्ठा करके उनको संबोधित किया है, अभी देखिए हाल ही में किया, उसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, एंड ही हैज वेरी क्लियरली टोल्ड कि टूरिज्म का पोटेंशियल अनटैप्ड है इंडिया में, बहुत कुछ है। सो लेट्स टेक ए प्लेज, डोमेस्टिक टूरिज्म को इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर स्कूल एजुकेशन हम लोग बनाएं। और उसके अलावा कल रात को जब हम मिलेंगे, आई विल टेक यू टू इंजीनियर डॉली बसीन मैम, शी इज द फाउंडर स्मार्ट एज, वो आपसे कल बातचीत करेंगी, व्हाट आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गॉट टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। जो ये सोच रहा है मैंने 2 साल में रिटायर हो जाना, 3 साल में रिटायर, मैं क्या करूंगा सीख के, मोबाइल में कॉल रिसीव कर ली, बहुत है, बस इतना ही चलेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प ईच वन ऑफ अस। हम सबका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियाज डेवलपमेंट, वी ऑल गॉट टू सी। सो टुमारो इवनिंग एट 8 PM you would be meeting engineer Dolly Basin ma'am on emerging technology trends in tourism। और आपको याद है हर सैटरडे को हम आपको शाम को लेकर चल रहे हैं 5 बजे, शवस्य नारती तत्तको शवस्य नारताई दो देश में सो konnichiwa watashi wa शर्मा देश, and we will be traveling to Japan। MOU साइन हुआ है भारत और जापान के बीच में, 3 लाख यूथ ने जाना है, you could be one of them, such a beautiful country, such a dedicated and devoted people to the growth of their country। हमको भी वैसा ही विशाल, सुंदर और कमिटेड भारत बनाना है। वेनरेबल रवि मेधांकर जी जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम के जापान में हेड हैं, वो आपके साथ जापानीज भाषा, जापानीज कल्चर, उस सब की बातचीत करते हैं। तो हम इसके लिए आपसे बातचीत करेंगे सैटरडे को, याद रखिएगा, ये सिर्फ आपको एडवांस में नोटिस बताना था। इन्हीं शब्दों के साथ कल रात को 8 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी एक अलग से नए कार्यक्रम के साथ, डॉक्टर डॉली भसीन मैम के साथ। हम टूरिज्म को, वी आर पैशनेट अबाउट टूरिज्म, वी वांट टू डेवलप टूरिज्म, वी आर कमिटेड टू प्रमोट टूरिज्म। आइए हम सब इकट्ठे हों और हम सब इकट्ठे मिलके, और यूट्यूब पर जाकर इंडिया टूरिज्म सॉन्ग देखिएगा। 1994 के अंदर हम लोगों ने बनाया, 1994 के अंदर इंडिया टूरिज्म सॉन्ग, वैसे ही चंडीगढ़ टूरिज्म सॉन्ग है, वैसे ही पंजाब टूरिज्म सॉन्ग है। व्हाई नॉट, हमेशा सोचिए आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाट न्यू यू कैन डू। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। जितने लोग भी आज प्रोग्राम में जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत, गुणीजनों लोगों को बहुत बहुत नमन, और पुनः आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं, आज नव वर्ष की शुभकामनाएं। आइए एक प्रयास करें, हम सब इकट्ठे मिलकर भारत के पर्यटन के माध्यम से भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है,
उस डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। मिलते हैं कल रात को 8 बजे पुनः। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।